Until you have not tasted orange, can you say what the taste is? Right? So certainly on the same plane, until you have not experienced Atma and Brahma or Paramatma, you cannot have any solid position to say that you have the experience or the understanding about it. Right? Getting my point? So the real karma yoga cannot be practiced by the one who is ignoramus. The one who is not aware of one's own self, who is not aware about what the real being, this Atman, is. See, we cannot satisfy our hunger by hypothetically thinking about food. Although we have tasted food so many times, and yet, even after tasting the food, just with the imagination, fanciful imagination about the food will not satiate your hunger. And about Atma, you don't even have the taste of it. So you can't even imagine, you can't even visualize, you can't even think what it would be. So in reality, when Krishna said practice karma yoga or be a nishkam karma yogi, he in a nutshell is giving the biggest challenge to you and the biggest homework to you, that until and unless you have not understood, explored mind, and now after the session you are pretty aware that mind is not just mind. You need to mind the mind, you need to understand the mind, and mind is a multifaceted, multidimensional, multi-layered enigma, mechanism. So until you have not explored, understood mind and the intellect, because what is intellect? At the moment there is no intellect. At the moment it is just the mind which keeps on flip-flopping and moving like a pendulum from one point to another, and finally it reaches out to a conclusion, okay, this is right. And you think that is the intellect, but actually it is not still the intellect. So the one who has not understood, explored one's own mind, one's own intellect, and also one who has not understood how the senses are working. What is the way, mean and mechanism of your Gyanindri, your five senses, and how they create the trap for the mind, and how the mind wishfully and willfully falls in those traps. The person cannot come to the point of realizing the real self. And do you know what? The mind with which you are understanding me now is already so polluted. It isn't going to grasp what I am going to say, because you just need a half spoonful of yogurt to coagulate whole milk. Just few drops of lemon in milk is enough to spoil the whole milk.
So a mind which is filled with sourness of negativities, and a mind which is filled with anger, lust, malice, animosity, greed, indulgence, how would the amritam, the milk of jnana, stay in that mind? So, in this one word, practice karma yoga, Krishna is saying too many things. He was a very smart fellow. Very, very smart. He is asking you to master your mind, master your senses, master your intellect, and come to the state where there is no mind, where there are no deep impressions, where there are no archetypes of your past lives. Nothing is going to fog, and all fog is cleared. And reach to that state of nirvikalpata. Nirvikalpata is the state of total annihilation of all thoughts. I am not saying controlling the thoughts. I am not saying minimizing the thoughts. I am saying total annihilation of all thoughts. And then we will come to the point where your journey towards knowing who you are in your real sense will happen. So in a way, in this one word karma yoga, there is hatha yoga, there is raja yoga, there is a bhakti yoga, there is a jnana yoga. All yogas are very neatly weaved into this one word. So until and unless the one who has not arrived to this point can never become a Nishkam Karma Yogi. All these social workers and social clubbers, they always say this: we are Nishkam Karma Yogi, we are doing it for society, we are doing for widows and children and this and that. But the one who is slave of one's own mind cannot say, I am doing it selflessly, because neither they know what self is, nor they know what it means to be mindless. Well, there a mindless word has two meanings. One is when someone goes crazy, you say is a mindless. And when someone is enlightened, then that person too is mindless. So in a way, the Shastra says that a पागल और आत्मज्ञानी एक से ही होते हैं, दोनों के पास मन नहीं होता. एक नीचे गिर गया, एक ऊपर चढ़ गया, दोनों में फर्क बस इतना ही है. So in the real sense, निष्काम कर्म योग का अभ्यास करने के लिए आपके पास एक बहुत सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए. And only then this would happen. एक 14 साल की बच्ची अपनी माँ से कहती है, मम्मी मेरा बेबी कब होगा? तो माँ ने कहा, बेटे बेबी होने के लिए पहले तुमको बड़ा होना होगा, फिर तुमको शादी करनी होगी, फिर तुम दोनों अगर स्वस्थ होवोगे तो तुम लोगों का संजोग के बाद कंसेप्शन होगी, और फिर उसके 8 या 9 या 10 महीने के बाद तुम माँ बनेगी. तो माँ बनने की इस एक अनुभूति के लिए एक प्रोसेस है. आप उस प्रोसेस को फ्रॉग जंप करके निकल नहीं सकते हैं. इसी तरह से कर्म योग का अभ्यास वास्तव में करने के लिए जिस ऊंचाई की जरूरत है, उस ऊंचाई तक पहुंचे बगैर कोई कर्मयोगी हो नहीं सकता. तो कभी कभी हम ये देखते हैं कि लोग ये प्रूव करने के लिए कि वो बड़े नम्र हैं, हम्बल हैं,
वो अपनी हम्बलनेस का इतना बड़ा बिलबोर्ड बनाते हैं कि उनकी इन्फ्लेटेड ईगो उसी में दिख रही होती है। कह वो यही रहे होते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, पर इस कुछ भी नहीं में बहुत कुछ होता है। वास्तविक कर्मयोग की तरफ किसी भी मनुष्य को बढ़ने के लिए जिस तैयारी की जरूरत है, जिस काम की जरूरत है, जिस ऊंचाई की जरूरत है, उसको प्राप्त करना आवश्यक है। और आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, वेरी लकी इंडीड, कि आपने उस दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाया। अब उस कदम के बाद और कितने कदम तुम उठाओगे कि थक के वहीं बैठ जाओगे, कि आगे चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे, कि आप इस बात को समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, कि समझी हुई बात को यहीं पे छोड़ दोगे या आगे बढ़ोगे। इस विषय के ऊपर बहुत गहरे चिंतन की, बहुत गहरी सोच विचार की, बहुत गहरी चिंतना की जरूरत है। नहीं तो मियाँ गालिब का बड़ा अच्छा शेर है, यूं तो हमें जन्नत की हकीकत मालूम है, लेकिन दिल बहलाने को ख्याल गालिब अच्छा है। तो ऐसे बहुत से लोग जो गीता पढ़ते हैं, जो उपनिषद कभी कभार पढ़ लेते हैं, तो उनको भी दिल बहलाने को ये ख्याल बहुत अच्छा है कि हम जानते हैं कि गीता में क्या है, हम जानते हैं कि कर्मयोग क्या है, हठ योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, राजयोग क्या है। तो थ्योरेटिकली दे आर वेरी गुड, लेकिन वो पहुंचे कहीं नहीं होते। ऐसे ही जैसे कोई वर्ल्ड मैप लेके बैठे और सबसे पहले लोकेट करे वेयर आई एम इन गूगल मैप्स। ओके, आई एम सिटिंग हियर इन गन्नौर, नाउ वेयर इज पेरिस, हियर इज पेरिस, एंड गूगल मैप्स निकाले एंड द होल रोडवे और द एयरवे और द रेलवे मैप इज देयर एंड ही बिगिन्स टू मूव हिज फिंगर ऑन द मैप, पेरिस, जापान, France, Russia, and he begins to believe that I have traveled the whole world, right? Around the world in 8 seconds. So, कर्म योग की जो बात कही गई है, वह कर्म योग निश्चय ही प्राप्त करने योग्य स्थिति है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जिस तैयारी की ज़रूरत है, जिस समझ की ज़रूरत है, जिस ग्रोथ की ज़रूरत है और परसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है, उसके बगैर ये हासिल नहीं होती। Number one, what you are experiencing is not meditation. You have to know this. Although I use the word meditation very frequently and very freely, and that is how you people were introduced to these things, what you are practicing today. But let's bring the cat out today. What you do is not meditation, but it can lead you to meditation. Meditation cannot be taught. All those who say so that we teach meditation are just making fool of themselves. No one can teach meditation. The state of meditation is experienced only after a certain levels of your mind have arrived, and those certain levels of mind, which you may call concentration for now, are this state requires certain methods. So the methodologies which will lead you towards that direction too are being called meditation, but actually it is not meditation. But obviously when you will sit alone with your closed eyes and your senses withdrawal,
You are going to enjoy this. Why? Because that is the only place where you get maybe smallest drop of that purest nectar which is within you. So, but how long can someone stay in closed eyes? One has to open up. It isn't that you are sitting at home, that is why you have to do other works. Even if you would live in ashram or in a cave, a time would certainly come when you'll have to get up. Maybe answer the call of hunger, or maybe answer the call of urination. There are two combined things. And the body cannot survive without action. Nobody can survive without. You can minimize the actions, but you cannot totally eradicate actions. As long as the body is there, actions are going to be there. But what you experience in your closed eyes is a state of ekagrata. But obvious, when you will move into the action zone, that ekagrata vanishes. And then you miss that point. Definitely you will miss that point. But to make this ekagrata never ever go away, there is a very deeper practice which is required. And a higher intellect is required. And in the combination of these two, a third thing which is required is that is a very deep dispassion. Dispassion मतलब वैराग्य. वैराग्य मतलब आप कर सब कुछ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन आप इस बात से एक क्षण के लिए भी भूलते नहीं इस बात को कि ये जो कुछ हो रहा है इट इज मीनिंगलेस. जो कुछ भी हो रहा है ये बस एक्सटर्नल ड्रामा है जो इस शरीर के साथ साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है. अब इस वैराग्य के साथ जब अभ्यास जुड़ जाता है तो फिर धीरे 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 आप उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं जहां आपका अंतःकरण, आपका मन इतना शुद्ध हो जाता है that it begins to reflect all the times the one being, the one existence who is right there within you. जैसे इस दीवार में तुम शक्ल देखना चाहो तो तुम नहीं देख सकते हो, लेकिन शीशे में आपको शक्ल दिखती है. शीशा कहां से बना? लेकिन वो इतना रिफाइंड है, वो इतना रिफाइंड है कि उसमें आपका अपना चेहरा प्रतिबिंबित हो रहा होता है. लेकिन जिस मिट्टी से, जिस रेत से वो निकला है, उस रेत में आप देखोगे तो कुछ नहीं दिखता. तो इस समय पर जो प्रेजेंट कंडीशन है वह मन की इट इज नॉट प्रिस्टीन, इट इज नॉट क्लियर, इट इज नॉट प्योर. दैट इज व्हाई व्हाट यू experience for few moments or few minutes in a session, it just goes away when you begin to do other things. It is going to happen. आपने कभी किसी एक्रोबैट करने वाले को देखा हो जो कम से कम 100 फीट के ऊंचाई पर रस्सी बंधी है और उस रस्सी पर वो बेखट के चलता है, हाथ में डंडा भी नहीं रखता है बैलेंस के लिए, और उस पर चलता ही नहीं है, वो उस पर समरसॉल्ट कर रहा होता है. अब देखने वाले का जी हुआ, भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ें मैं भी करता हूँ. तो उसने अपने घर की छत को दूसरी सामने वाली छत के बीच में रस्सी बांधी और वो भी चढ़ गया उसके ऊपर. क्या होगा उसका? ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में पाया जाएगा with all the plasters, right? Broken bones. So what an acrobat is doing on the rope did not come to him in one day. That was sheer perseverance of that person who started practicing
and slowly developed his body muscles, his brain, and he slowly developed this fearlessness. And after years of practice, got this courage to do the exhibition of his art. So it takes time. एक आदमी ने हरिप्रसाद चौरसिया को बांसुरी बजाते हुए सुना, ये तो बड़ी मस्त चीज है, मैं भी बजाऊंगा। तो वो बाजार गया, बांसुरी खरीदी, खरीद के बड़ी खुशी से घर आया, और फिर बिल्कुल हरिप्रसाद जैसे कपड़े उसने बनवाए, कुर्ता पजामा और शॉल भी रखा और पान भी खाया और होंठ भी लाल किए। फिर जब पूरी अदा के साथ उसने बांसुरी को अपने होठों के पास लगाया और फूका तो अरे ये क्या हो गया। बड़ी कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ, कोई राग ना निकला, कोई सुर ना निकला, समझ नहीं लगी चक्कर क्या है। फिर वो अगले दिन फिर था हरिप्रसाद का शो, तो वो फिर गया देखने, तो वो सोचता है बांसुरी तो मेरी भी इसके जैसी है, पर मेरी वाली में ऐसी आवाज क्यों नहीं आती है। तो मन में भावना आई कि अगर मुझे यही बांसुरी मिल जाए तब तो पक्का वैसा ही मैं मजा लगा दूंगा जैसा ये लगाता है। तो वो बिहाइंड द स्टेज गया और उसने दांव लगाया और हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी को चुराया और भागा वहां से सीधे घर को, और फिर बैठ के अपने कमरे में उसने फिर से फूका, निकला फिर कुछ नहीं उससे, क्योंकि बांसुरी में से नहीं निकलता है, बांसुरी बजाने वाले में से निकलता है। याद रखना इस बात को। कभी कभी कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने अमुक ग्रंथ पढ़ लिया, अमुक सत्संग सुन लिया, अमुक कोर्स कर लिया, अब हमको सब कुछ आ गया है, अब हम जब करेंगे तो हम भी वैसे ही कर सकेंगे जैसा कहा गया था। लेकिन उनको ये नहीं पता, शब्द की ताकत नहीं होती है, शब्द के पीछे जो ऊर्जा काम कर रही होती है, असली चीज वो होती है। तो ऊर्जा विहीन शब्द मुर्दा होते हैं, ऊर्जा विहीन शब्द बेअसर होते हैं। बिल्कुल वैसे ही कि बांसुरी तो हो, पर बांसुरी के पीछे फूकने वाला हरिप्रसाद अगर नहीं है तो बांसुरी में वो मनमोहक ध्वनियां नहीं निकल सकती हैं। इसी तरह से जो आपको विधि हमने सिखाई या हमारी सीधी से आपने सीखने की कोशिश करी, वो काम कुछ भी नहीं करेगी। प्रश्न यह है कि उसके पीछे करने वाला व्यक्ति कितना शुद्ध था। How pure that mind was who was going to use that methodology. You cannot measure everyone with the same yardstick. Can you? You cannot. Similarly, it isn't the method which is going to open up these divine zones for you. It is with how much purity and sincerity you are going to use that. So if that is missing, your sincerity, your purity, your humbleness, the greatest method of the world given by the greatest master of this world still will not work for you. Still it won't work for you. इस बात का बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रणव है, कोई भी मंत्र है, ABCD, कोई भी मंत्र आप ले लीजिए। You can prove every mantra is useless. Why? Because your mind was useless. You would just say, इससे कुछ नहीं हुआ, कुछ और देखते हैं, इससे कुछ नहीं हुआ, कुछ और देखते हैं, अच्छा बीज मंत्र लेते हैं, उससे कुछ होगा और इससे कुछ होगा। You can keep on changing the mantras and you can keep on changing gurus. People keep on doing this frog jump from one to another and one to another and one to another, and they still don't reach anywhere.
Why? Because the mind with which they were doing the mantra, or the mind with which they were approaching any master, that mind was so impure. It turned out the purest thing also into impure. So that is why understanding the mind and bringing that degree of purity in the mind is very important.